Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Once again, welcome to our channel Destiny in Your Hand. Today we are going to learn some common English idioms. You can use it to sound like a native speaker. So without wasting our time, let's dive into the video. तो फ्रेंड्स सबसे पहले इडियम्स की बात करते हैं। इडियम्स होते क्या हैं, इडियम्स के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है। इडियम्स के लिए हम ये कहेंगे कि वी कैन ट्रांसलेट देम करेक्टली बट वी कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इडियम्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम उन्हें एक्यूरेट ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम उसकी मीनिंग को कंसीडर कर सकते हैं। वी कांट ट्रांसलेट देम करेक्टली बट वी कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला इडियम्स है वो है पुल योर सेल्फ टुगेदर। इट मीन्स स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बेबी, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, एक्टिंग लाइक एन एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कहेंगे कि आफ्टर हियरिंग सम बैड न्यूज़ ही कुडंट पुल हिमसेल्फ टुगेदर। सेकंड इडियम की तरफ बात करें, सेकंड इडियम से हमारा बी इन टू माइंड्स। इट मीन्स यू आर इनेबल टू चूज एन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू चॉइस बट यू कांट चूज वन ऑफ देम। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि आई एम इन टू माइंड्स अबाउट इमिग्रेटिंग टू अ न्यू कंट्री। इट मीन्स कि आपके पास दो चॉइस हैं बट आप कौन सी चॉइस सेलेक्ट करें, आप इसमें कोई चूज़ नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं कर पाते। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बी इन टू माइंड्स। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा इडियम्स है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दिस वन इज क्वाइट इजी एंड यू ऑल नो अबाउट इट वेरी वेल। पीपल लाइक टू रिएक्ट बेटर ऑन रिजल्ट, अदरवाइज वर्ड्स आर जस्ट फ्रेजेस। कोई भी इंसान हो वो हमेशा एक्शन पे रिएक्ट ज़्यादा करता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। Cry over spilled milk. Cry over spilled milk. It means to feel sorry about an earlier mistake or problem that cannot be changed. ये idioms हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जब पास्ट में हमसे कोई गलती हो गई हो या कोई मसला हुआ हो जिसे हम अब चेंज ना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से there is no use of crying over spilled milk, that was a bad decision to invest in that company. It means कि हमने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, वो हमारा पैसा वेस्ट हो गया, वी आर गोइंग इनटू द लॉस बट वी कैन चेंज राइट नाउ। फ्रेंड्स, अब जो हमारा इडियम्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सब उसे अच्छे से जानते हो। हमारा नेक्स्ट इडियम्स है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जैसे मोस्टली हम यूज़ करते हैं एक तीर से दो शिकार। किल टू बर्ड विथ वन स्टोन मीन्स हम इसे तब यूज़ करते हैं वेयर वी आर गोइंग टू अचीव टू गोल्स विथ वन एक्शन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इडियम्स है हिट द बुक्स। इट मीन्स टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे जुमले में यूज़ करें तो हम कहेंगे कि हिट द बुक्स मीन्स इफ़ आई से आई एम सॉरी आई कांट ज्वाइन यू दिस वीकेंड, आई हैव टू स्टडी। मैं आपको इस हफ्ते ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे स्टडी करनी है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इडियम है टू लॉस वंस माइंड। To lose one's mind means to start behaving like a crazy or silly. It means if I say, if this lockdown continues, I will lose one's mind. It means कि अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू चलता रहा तो मैं अपने आप को खो दूँगा। मीन्स अपने आई एम गोइंग टू आउट ऑफ कंट्रोल। वी कैन यूज इट लाइक दैट। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट इडियम्स है। ये मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। आई मीन आई यूज इट मैनी टाइम्स इन माई लाइफ। जो हमारा लास्ट इडियम्स है वो है to go with the flow. It means not stressing about anything. For example, if I say I decided not to stress anything, just go with the flow and see what happens.